Hello and welcome back to this channel. Dear students, this session is quick revision for MOSFET circuits. It is unit number 2 from the subject electronic circuits. First part, MOSFET as a switch. So this is the diagram which shows how the MOSFET works as a switch. We know that in case of switching action, there are two positions, on and off position. Now this is the gate terminal, this is the drain terminal, and this one is source terminal. Input is applied to the gate terminal. We know that whenever input V in is less than VTH, then MOSFET is not conducting, MOSFET is not switched on. So first consider the case V in is less than VTH as shown by this line. This shows V in, that is input voltage, which we are applying to the gate of this MOSFET is less than VTH. VTH is the threshold voltage. Then this MOSFET is off. We are considering N-type MOSFET, N-channel MOSFET. So this MOSFET is off. That means any current will not pass through this branch, through this RD, and V out will be equals to VDD. So you are getting the corresponding output waveform here. Output waveform like this. मतलब ये जब ऑफ है, V in is less than VTH, you are getting high output voltage like this. Now, when V in is greater than VTH, which is shown by this line, when V in is greater than VTH, at that time MOSFET will start conducting, due to which there will be some current flowing through RD and there will be certain voltage drop across this resistance RD. So whenever this MOSFET is on, that means whenever it is it has started conducting, so it acts as a closed switch. It is shown like this. So it is acting as a closed switch, and when it was not conducting, it was acting as an open switch. So it is shown like this. This is open switch, this is closed switch. So when Vn becomes greater than VTH, MOSFET acts as a closed switch. Because of this closed switch, some current will pass through this resistance RD and you are getting the output voltage like this. Means this output voltage will not be now equals to VDD. पहले केस में देखो, जब V in कम था, मतलब when V in was less than VTH, entire VDD was available as the output voltage. तो यहाँ पे output voltage हम लोगों ने VDD बनाया था. दूसरे केस में when V in becomes larger, then at that time this MOSFET starts conducting and there will be some voltage drop across resistance RD, because of which यहाँ पे draw करता हूँ मैं, you are getting this much voltage. मतलब I am talking about this. जब V in becomes greater than VTH, so MOSFET started conducting, because of which V out, that is this output voltage, will be current, that is ID into RD. So that much voltage drop. So I will write here ID into RD. This much voltage drop will be available at the output voltage. That means it is acting as a closed switch. Likewise, you can use MOSFET to operate as a switch. नेक्स्ट, MOSFET एज अ डायोड और एक्टिव रेजिस्टर. देखो दोनों के लिए डायग्राम सेम रहेगा, मतलब एज अ डायोड और एक्टिव रेजिस्टर. फर्स्ट विल टॉक अबाउट दिस डायग्राम. दिस इज एन चैनल इनहांसमेंट टाइप ऑफ MOSFET. ऑब्जर्व दिस डायग्राम केयरफुली. यहाँ पे देखो गेट और ड्रेन टर्मिनल कनेक्टेड है डायरेक्टली and no signal is applied at the gate terminal, so there is no control as far as this gate terminal is concerned. Gate drain and gate are connected together and this is the source terminal. Now due to this connection of drain and gate, drain and source will act as PN junction. So this structure acts as a PN junction diode. As I said, same structure can be used as an active resistor. In this case, when it is working as an active resistor, basically it is used in case of amplifiers to work as an active load or active resistor. Since gate and drain are connected, we can say VGS, that is gate to source voltage, will be same as the voltage between drain to source, that is VDH, and in this case also the MOSFET will be working in the saturation region. अब देखो ये N चैनल का डायग्राम मैंने बनाया है. अगर P चैनल का डायग्राम बनाना है तो सिंपल चीजें याद रखना है. ये एरो का पोजीशन चेंज करना है लाइक दिस. पहले initially it was in outward direction, now make it inward for P channel, and
interchange source and drain terminal. So if you make this much change, the circuit will be for P channel MOSFET. Next part, we'll discuss how MOSFET works as a current sink or current source. देखो ऐसे पार्ट के लिए as far as exam point of view is concerned, you may expect direct question. That means explain how MOSFET works as a current source or current sink. ये दो वर्ड्स याद रखना है. Source means it is providing the current, it is acting as a current source. Sink means it is taking the current. So first diagram is the diagram for MOSFET acting as a current sink. यहाँ पे VGG दिखाया है. This is connected to the gate terminal. We know that this is gate terminal. Initially, using any potential divider, voltage divider circuit, this voltage is adjusted. Once this voltage is adjusted, it is maintained constant. Now after that, this V out, I mean this MOSFET will accept the current V out, and this circuit acts as a current sink. So this is the output voltage V out, and this current is the current output current I out. This is the graph of V out versus I out. Observe this graph, ये 0 है, मतलब 0 to this value VGG minus VT. That means voltage applied at the gate minus threshold voltage. Between this region, the graph is changing. After this point, the graph almost remains constant. So, if you want to operate MOSFET as a current sink, then the condition must be V out should be greater than or equals to VGG minus VTT, क्योंकि इस region में output constant रहता है. Next, this is the diagram which shows PMOS, which is working as a current source. पहला diagram NMOS का था, it was acting as a current sink. This is acting as a current source. Again, logic remains same. I have plotted the graph of I out versus V out. Look at this diagram. ये 0 है, यहाँ से this level. I mean, I am talking about VGG plus VTH. The value remains constant. So, if you want to make use of MOSFET as a current source, then the condition is V out should be less than or equals to VGG plus VTH. मतलब इस रेंज में. This is the way how MOSFET can be used as a current sink or source. Now let us discuss current mirror. From the exam point of view, we may expect the question like this. Explain two transistor MOSFET model of a current mirror, or explain basic structure of a MOSFET to work as a current mirror. As the name indicates, current mirror मतलब इनपुट में जो करंट है वही आउटपुट में रिफ्लेक्ट होगा. दैट इज कॉल्ड करंट मिरर. वी हैव टू डिजाइन दिस सर्किट यूजिंग अ MOSFET. इनपुट साइड में देखो, वी आर यूजिंग टू MOSFETs M1 and M2. The gate terminal, this is the gate terminal. Gate terminal of both the MOSFETs are common. That means they are connected with each other. This is MOSFET M1, MOSFET M2. For first MOSFET, the current flowing through this drain terminal, this is the drain terminal, is I reference. This is the reference current. अब देखो, ये जो drain terminal है, it is connected with the gate terminal for the first MOSFET. So this MOSFET works in the saturation region. Since the gate is common, and if the MOSFETs M1 and M2 are identical, then we can easily prove that this output current will be same as the reference current. So we can easily say output current I0 will be equals to I reference. इसका separately proof का वीडियो मैंने बनाया है और इसके ऊपर डिटेल भी वीडियो में एक्सप्लेन किया है. Then there are two more types. One is cascade current mirror and second is Wilson current mirror. These two extended type, I mean advanced types, are used to improve the resistance of the MOSFET circuit. So if the basic question is asked, you need to explain this diagram. If clearly it is mentioned in the question, explain cascade current mirror or Wilson current mirror, then you will have to write that explanation. जैसे मैंने बताया, ये ब्रीफ रिवीजन का सेशन है. पहले मैंने ऑलरेडी इसके लिए डिटेल में वीडियो तैयार किया है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स. एज फार एज दिस सब्जेक्ट सिलेबस इज कंसर्न, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर्स इन आवर सिलेबस. One is voltage amplifier, second current amplifier, third trans conductance amplifier and fourth trans resistance amplifier. ये 4 डायग्राम आप लोगों को याद रखना है. बहुत सिंपल टेक्निक है डायग्राम याद रखने के लिए. उससे पहले हमेशा एक चीज याद रखना है. Whenever there is a voltage source, resistance must be connected in series with voltage source. And whenever you are using a current source, I mean at the input side, if you are using a current source, resistance must be connected in parallel. Then another point is
there is one parameter which is called gain, which is ratio of output to the input. So if it is a ratio of output voltage to the input voltage, it is called voltage gain, and if it is ratio of output current to the input current, it is called current gain. Now first type, voltage amplifier. अब देखो, as the name indicates, function of amplifier is to amplify the signal. Since it is voltage amplifier, it will amplify the voltage. Observe this diagram. This is Vs, that is source voltage. Rs is source resistance. ये वोल्टेज है इसलिए इसके सीरीज में कनेक्ट किया. इनपुट साइड का सेक्शन है इसलिए यहाँ पे Vi मार्क किया. At the output side I have marked AVVI. Vi is the input voltage. AV is voltage gain. A is gain. V stands for voltage. So this value of voltage source, this is the voltage source whose value is AV into Vi. R0 is the resistance at the output side, RL is the load resistance. अब ये हर एक डायग्राम के लिए और एक चीज याद रखना है, फॉर वोल्टेज एम्पलीफायर RI मतलब इनपुट रेजिस्टेंस मस्ट बी इंफिनिटी, मतलब ये रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, एंड R0 दैट इज आउटपुट रेजिस्टेंस मस्ट बी जीरो. ये आप लोगों को याद रखना है. अब देखो, इससे ये इक्वेशन लिख सकते हो, इफ RI इज इंफिनिटी, ये इंफिनिटी है, सो VI is approximately equals to Vs, मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज will be same as Vs, क्योंकि Ri इंफिनिटी है, मतलब दिस Rs इज वेरी वेरी स्मॉल. सिंस इट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू Ri, क्योंकि हम लोगों ने लिखा है Ri इंफिनिटी है, सो सिंस इट इज वेरी स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप across Rs will takes place. So approximately Vi is equals to Vs and V0, यहाँ पे हम लोग आउटपुट वोल्टेज मेजर कर रहे हैं V0. V0 will be equals to AVVI, मतलब देखो ये पॉइंट का वोल्टेज दैट विल बी V0. अगेन R0 इज जीरो, मतलब ये जो वोल्टेज है पूरा यहाँ पे आ जाएगा. सो V0 इज इक्वल्स टू AV इंटू VI एंड वी हैव रिटन VI इज इक्वल्स टू VS. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर वोल्टेज एम्पलीफायर. लाइकवाइज हर एक डायग्राम के लिए सिर्फ एक कंडीशन याद रखना है, डायग्राम और कंडीशन आप ये ऑटोमेटिकली लिख सकते हो. सेकंड इज करंट एम्पलीफायर. एज द नेम इंडिकेट्स इट एम्पलीफाइज द करंट. अब देखो, इनपुट साइड में करंट सोर्स मार्क किया है, तो करंट सोर्स है इसलिए पैरेलल में रेजिस्टेंस मार्क किया Rs. दिस इज II इनपुट साइड करंट, Ri इज रेजिस्टेंस एट इनपुट साइड. इसके लिए कंडीशन याद रखना है, Ri 0 एंड R0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी. Ri 0 है और R0 इंफिनिटी है. R0 इंफिनिटी है और ये करंट सोर्स है. दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट करंट सोर्स. ये डायमंड शेप सिंबल रिप्रेजेंट्स डिपेंडेंट करंट सोर्स. Ri is 0 and R0 is infinity. ये infinity है, so entire this current will pass through RL only. So I have written IL is equals to AI into II because R0 is infinity and II is same as IS. ये जो current है, this is same as IS because this resistance Ri is 0, that means Rs is infinity. तो ये पूरा करंट यहाँ तक आ जाएगा. So this is the equation of current amplifier. अब देखो ये इक्वेशन, जैसे इस इक्वेशन में भी ये लोड करंट है. दिस लोड करंट इज इक्वल्स टू AI टाइम्स सोर्स करंट. IS इज द सोर्स करंट, ये वाला करंट. सो वैल्यू ऑफ AI इज मच लार्जर देन 1, दैट मींस द सर्किट एक्ट्स एज करंट एम्पलीफायर. नेक्स्ट, ट्रांसकंडक्शन एम्पलीफायर. अब देखो ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इसका इनपुट का ये पहले डायग्राम का पार्ट यहाँ पे एज इट इज ड्रॉ किया है और आउटपुट का दूसरे डायग्राम का पार्ट ड्रॉ किया है. सिर्फ ये वैल्यू चेंज्ड है. यहाँ पे है AI VI, यहाँ पे लिखा है GM VI. GM इज ट्रांस कंडक्टेंस. इसके लिए कंडीशंस याद रखना है, Ri इज इंफिनिटी, R0 इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब दोनों इंफिनिटी है, Ri एज वेल एज R0. सो VI इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू VS. ये VS है, यहाँ पे VI मेजर कर रहे हैं. Ri इज इंफिनिटी. So compared to Ri, Rs will be very very small, so there will be very small voltage across this. So Vs is same as Vi approximately, and IL that is output current will be GM VI, मतलब ये पूरा करंट यहाँ पे जाएगा because R0 is infinity, तो पूरा करंट यहाँ पे जाएगा. So IL is equals to GM VI and VI is Vs, so IL is equals to GM into Vs. This is called transconductance amplifier. Do remember conductance is opposite to that of resistance. Next is trans resistance amplifier. जैसे मैंने बताया कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर अपोजिट टू ईच अदर. ये इनपुट और आउटपुट साइड एक्सचेंज करना है, ऐसा सोच लो. और थिंक लाइक दिस, ये यहाँ पे करंट सोर्स इंडिकेट किया है, मतलब ये वाला पार्ट एज इट इज ड्रॉ किया है. यहाँ पे आउटपुट सेक्शन में
we are making use of this part, second part of first diagram. सिर्फ ये वैल्यू चेंज है, that is RMII. कंडीशंस इसके लिए याद रखना है. Ri is 0, R0 is equals to 0. तो Ri 0 है, R0 0 है, so V0 is equals to RMII. मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है ये पूरा वैल्यू 0 है, मतलब इट इज वेरी वेरी स्मॉल. तो ये जो भी वोल्टेज है इस पॉइंट पे आएगा अप्रोक्सीमेटली. सो V0 इज RMII एंड which is same as Rm into Is, because II is approximately same as Is. So this is about trans resistance amplifier. So these are the four basic types of amplifiers. Next part is voltage series feedback and current series feedback. उससे पहले first we'll discuss briefly about the feedback. Feedback मतलब part of output signal is fed back, returned back at the input side. That is called feedback connection. There are two types of feedbacks. One is positive feedback and another is negative feedback. In case of positive feedback, input and output are in phase. In phase का मतलब है जब भी इनपुट का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, at the same time you are getting maximum value of the output. So input and outputs are in same phase, that is positive feedback. If input and outputs are out of phase, मतलब जब इनपुट का मैक्सिमम वैल्यू है तो आउटपुट का मिनिमम वैल्यू आ रहा है, that means they are out of phase, then it is called negative feedback. So we are talking about voltage series feedback. This is the block diagram of voltage series feedback. We are using series mixing, as the name is voltage series feedback. That means we have to make use of series mixing. This is the supply voltage Vs. We are using voltage amplifier and we are taking voltage sampling. मतलब देखो एक आउटपुट सिग्नल है, ये एम्पलीफायर है, यहाँ पे इनपुट अप्लाई किया है, वोल्टेज एम्पलीफायर का कुछ आउटपुट आएगा, दैट इज एक्चुअल आउटपुट. उसका कुछ पार्ट हम लोगों को वी हैव टू टेक दिस पार्ट, टेक सम पार्ट ऑफ इट एंड वी हैव टू ट्रांसफर थ्रू द इनपुट साइड. दिस इज कॉल्ड फीडबैक कनेक्शन. तो ये पार्ट, आउटपुट का पार्ट कुछ हमें वापस इनपुट साइड में ट्रांसफर करना है. फॉर दैट वी आर यूजिंग वोल्टेज सैम्पलिंग सर्किट. सो दिस इज द वोल्टेज सैम्पलिंग बिकॉज वी आर taking samples of voltage and then we are passing forwarding it towards the input side through the feedback element. So this is also called feedback network. Input to this feedback network or feedback element is V0 क्योंकि आउटपुट का पार्ट हम लोग ले रहे हैं, and output of feedback network is Vf. This Vf is applied in series with Vs, so it is series mixing. तो ये मिक्सअप हो रहा है इनपुट सिग्नल के साथ. So this is called voltage series feedback. Another is current series feedback. अब डायग्राम में चेंजेस कैसे करने देखो. I am talking about current series feedback. तो current series feedback है तो यहाँ पे ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर यूज होगा. So ट्रांस कंडक्टेंस यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर इंस्टेड ऑफ वोल्टेज एम्पलीफायर. और यहाँ पे वोल्टेज सैम्पलिंग लिखा है, इंस्टेड ऑफ दैट विल बी परफॉर्मिंग करंट सैम्पलिंग. रिमेनिंग थिंग्स आर एज इट इज. सो दिस विल बी द ब्लॉक डायग्राम फॉर करंट सीरीज फीडबैक. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट, ऑसिलेटर्स, बार्क-हुसेन क्राइटेरिया, और इसके साथ आप लोगों को आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और विन ब्रिज ऑसिलेटर तैयार करना है. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस पार्ट, सो डू नॉट स्किप सच पार्ट बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. Presently we are brushing up the concept. So oscillator is basically an amplifier which works with positive feedback. मतलब कोई भी एम्पलीफायर है उसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक दे देंगे. तो ऑसिलेटर का फंक्शन ये है कि उसको if you won't apply any input, then also by taking the feedback, by taking the positive feedback, it generates oscillations at the output. That is the meaning of oscillator. So it is an amplifier which does not have any input but makes use of positive feedback टू जनरेट द आउटपुट. लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है, दैट इज कॉल्ड बार्क-हुसेन क्राइटेरिया. फर्स्ट कंडीशन है जो भी फेज शिफ्ट है, मतलब पॉजिटिव फीडबैक लेते वक्त टोटल सर्किट में जो भी फेज शिफ्ट है, दैट शुड बी 0 डिग्री, 360 डिग्री और इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री. एंड सेकंड कंडीशन इज मॉड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बीटा should be greater than or equals to 1, where A is open loop gain of amplifier and beta is the feedback factor. जैसे मैंने बताया ये डिटेल में आप लोगों को करना है. बार्क-हुसेन क्राइटेरिया, आरसी फेज शिफ्ट एंड वेन ब्रिज फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, which is the last video of unit number 2 which I have already created. So that's it for today's session. So dear students, all the best for your exam. Thank you. Thanks a lot for watching this series.